आज हम पढ़ने वाले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कब होगा? अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो फंक्शन ऑफ टी, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एफ ऑफ एस. So f of s will be transformation of f of t, and we'll do integration of f of t and kernel st. Kernel will be variable to function s and t, and function will be f of t is the function of variable t and integral over t. And what is kernel? Kernel, a function of two variable. So integral transformation f of s of f of t will be 0 to infinity by e raised to power minus st dt. It will be Laplace transformation of function and e raised to power minus iota. This will be Fourier transformation of function. Now Laplace transformation. It exists if function of t is sectionally continuous. Means if this is a function, it may be continuous in this part, after all that this will be continuous in further part, like this. It will be called sectionally continuous and exponential also, and its order is t raised to t is 0 to infinity, tends to infinity. So Laplace transformation function will be e raised to power minus st function of t dt. We represented Laplace transformation like this, and if we want to get that function back, then inverse Laplace transformation of that function will get the function back. Inverse Laplace transformation. We know that f of s is 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. So in inverse function, what will be there? Simply change the variable, t either s either. Suppose we have function, constant function f of t equal to 1, then its Laplace transformation f of s equal to 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. Put f of t equal to 1. So after solving this integration, we get 1 by s. So we can say if there is any function, constant function c, then its Laplace transformation will be c by s. Now this some transformation we have to remember in order to solve the equations. Constant function 1, then Laplace transformation is 1 by s. First, if its function is t raised to power n, then Laplace transformation of t raised to power n is factorial n divided by s n plus 1. Remember that, where n is integer, and if n is not integer, then gamma n plus 1 by s n plus 1. Simply take t square. 2 is an integer, so factorial 2 divided by s raised to power n plus 1 है ना. देखो यहाँ पे factorial n divided by s raised to power n plus 1, t square e minus st dt. So first function integration of second function minus differentiation first function integration of second function का पूरा प्लस माइनस फिर प्लस, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन. वैल्यू पुट कर लो, बचेगा 2/s³. थर्ड exponential function l e raised to power at, then what will be there? E raised to the power minus s minus a into dt. So here after solving this integration we have 1 by s minus a, है ना. ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव में है तो अपना एस माइनस ए आता है ना. ई रेस्ट टू पावर पॉजिटिविटी, सो 1 by s minus a is our answer. Now Laplace transformation sine function, sine at. So simply we have to remember this. Laplace transformation of sine at will be a upon s square plus a square, and in cos
we have s over s square plus s. In sine we have a by s square plus a square. In sine we have in s sine we have a s square plus a square. In cos we have s. Now sine hyperbolic same. In numerator it is a, but in denominator minus sign will be there. In cos same is, but in denominator minus sign is there. Why it is so? Because we know the formula for sine hyperbolic and cos hyperbolic. So what is sine hyperbolic? E raised to the power at minus e raised to the power minus 80 divided by 2, and cos it will be plus. So when you put it in formula, in integration formula, simply as shown here, what will get? A by s square plus a square. Now linearity transformation. L f of n f l और टू फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सम का, टू फंक्शन के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो इंडिविजुअली उनके सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होता है. ये लिनियरिटी होती है. नाउ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज वी हैव ए फंक्शन this and we want to calculate e raised to power 80 multiply this function, then what will we have? We have f s minus a, as I explained earlier. Simply l e raised to power 80 equal to 1 by s minus a, and l e raised to power 80 and multiplied with t raised to power n. So what will be there? We know that in function t raised to power n, factorial divided by s n plus 1 है ना, ये था अपने पास. सो एल ई रेस्ट पावर 80 इज एस माइनस ए, है ना. ये दोनों का कम्बाइंडली अपने पास आ जाएगा. अब साइन में क्या होता है हमको पता है. साइन में क्या था अभी? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ बी है इसलिए बी, लेकिन साथ में ये आ गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वजह से एस माइनस ए हो जाएगा. सिमिलरली कोस में क्या था? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था. अब यहाँ की जगह बी है इसलिए बी, लेकिन एस की जगह अपने क्या रखना पड़ेगा? एस माइनस ए. कोस हाइपोथेटिक में क्या था? वही एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, है ना. माइनस था ना कोस में, ये देखो माइनस था, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा. हाइपोथेटिक में माइनस आता है. Okay. Now change of scale property. If there is a function and function is itself multiplied by a, then Laplace transformation will be divided by a, and a will be outside in denominator. This is our function and it is multiplied by with function of 80. So what will we will change if the function 80 equal to y. So we left with this. So what is our function? Laplace transformation a of s by a. Now transformation of derivative. Suppose we have Laplace transformation function this, then what will be its derivative? s f of s minus f of t equal to 0 पे, है ना, याद रखना है. s f of s minus f of 0. If it's a double derivative, then s square f of s minus s f of s simply, and one more minus f of n, simply here l f of n t. So s raised to power n f of s minus f of 0, है ना, s n minus 1 f of 0 and s minus 2 f of prime 0. Thus we can continue till last minus f n minus 1 0. Once again, first s raised to power n f of s, फिर s minus n f of 0, and then s n minus 2 f of prime 0, and continue to last moment. Suppose we have Laplace transformation L to under t upon pi equal to 1 by s 3 by 2, then L equal to 1 by n dot pi t. We know that if f of t is this function, then its derivative is this.
1 upon dot pi t. So in question we have asked about Laplace transformation of derivative of the function, because it is derivative. We know that L of f of t f prime t equal to s f of s minus f of 0. So s f of s minus f naught will lead to 1 upon dot s. Okay. Now transformation of integrals. If Laplace transformation given to us is this, then the Laplace transformation of integral of the our main function f of u du will be 1 by s f of s. If t raised to s multiplies with the function, then it is very important. What we are left with minus 1 raised to the power n d by ds n f of s, है ना, minus 1 raised to the power n and n times the differentiation of that Laplace transformation function. ठीक है. Now what will happen if we division by t? So simply f of u du integral is to infinity. Second shifting property we have, if a of this function and our origin shifted to a, then e raised to the power minus as f of s. Now unit step function, heavy side unit step function. We know that in potential well we also potential step we also do this. Suppose we have a function which is defined as this. In less than a limit it is 0 and greater than a it is 1. Step function. So when you solve this, int less than it is 0 and int greater than is 1. So L of ut minus a Heaviside function will be 1 by s e raised to power minus s. Okay. If a is equal to 0, then only 1 by s. Delta function. In delta function, e raised to power minus a is simply one वैल्यू आएगी, उसको सोल्व करोगे तो e raised to power minus as. इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके याद रहेंगे, है ना. Laplace transformation of periodic function. Suppose we have periodic function with period capital T, then Laplace transformation will be 1 or 1 raised to power minus 1 by 1 minus e raised to power minus st and 0 to e minus st of t dt. In Fourier transformation we will use it. Suppose we have function sin t 0 to pi and pi to 2 pi. So we can see period is 2 pi. Okay. So simply put in the formula 1 over 1 minus e raised to power minus st 0 t e minus st f of t dt. So put t equal to 2 pi and when you solve it 0 to pi and 0 to 2 pi, in this it will be 0, only this will be left out. So when you solve it, simply we can use sine formula also. This was the formula, e raised to power ax sin bx dx. सिंपली मैनिपुलेशन है, मैथमेटिकल थोड़ा सा वो करना है. ये फॉर्मूला रख के वैल्यू रख दो, ठीक है. और यहाँ पे जो आ रहा है माइनस 2 पाई एस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ बचेगा अपना आंसर. ये नाउ इनवर्स का सेम है जैसा पहले कर रहे थे. देखो 1 का 1 बाई एस था, सो 1 बाई एस का 1 ई के पावर 8 था. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से 1 अपॉन एस माइनस से कर रहे थे,
सो 1 माइनस एस 1 माइनस एस माइनस ए का ई रेस्ट टू पावर टी हो जाएगा। फैक्टोरियल सो टी की पावर एन का 1 और एस एन था, सो 1 बाई एस रेस्ट टू पावर एन का टी रेस्ट टू पावर एन माइनस 1/5, बस ये याद रखना है ना थोड़ा सा, ठीक है। और फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 था। अब यहाँ पे ओनली एस की पावर एन, इसलिए दोनों में क्या लगेगा -1 लग जाएगा। 1 अपॉन एस की पावर एन माइनस 1 एस माइनस ए रेस्ट टू पावर एन, वही वहाँ एन प्लस 1 था, यहाँ ओनली एन है इसलिए यहाँ पे एन माइनस 1 लगा दो। और देखो क्या 1 में नीचे एस माइनस आ रहा है इसलिए ई की पावर टी साथ में आ जाएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से। जब भी एस के साथ माइनस ए आ रहा है तो ई रेस्ट टू पावर टी कन्फर्म आएगा। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 होता है, लेकिन ऊपर भी ए आता है इसलिए इसको डिवाइड कर रखा है ना। ये कोस का है, अपने को पता ही है, ये साइन हाइपरबोलिक है, ये कोस हाइपरबोलिक है। अब देखो एस माइनस आ गया मतलब ई रेस्ट टू पावर टी कन्फर्म आएगा। और क्या आ रहा है, साइन बी टी आ रहा है, और बी आ रहा है क्यों, क्योंकि ऊपर भी नहीं है इसलिए। ये एस माइनस से आ गया इसलिए ई रेस्ट टू पावर टी कन्फर्म आएगा। और एस ऊपर कहाँ होता है, कोस में, प्लस आ रहा है इसलिए कोस आएगा। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको याद रखना है, ठीक है। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका होता है, 1/2 टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। सोल्व कैसे किया है, यहाँ से वैल्यू रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला था ना अपना, क्या था फॉर्मूला, 1/a, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, -1 रेज़ टू द पावर n एंड n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सो -1 रेज़ टू द पावर 1 है ना, एंड dy/dx ऑफ एक टाइम इसका फंक्शन का लगा लेंगे, क्योंकि अपने को पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पे साइन 80 माइनस 80 कोस 80 करना पड़ेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे पूछा है पिछली एग्जाम्स में, कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होता है, 1/s होता है कांस्टेंट फंक्शन का। तो सेम क्वेश्चन 1/a से आएगा। देखो 1 प्लस साइन 2t, तो 1 का क्या होता है 1/s, और साइन 2t क्या होता है 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी क्वेश्चन ही आता है जनरली, पर टफ भी आ जाए तो उसका भी अपने को प्रिपेयर होना चाहिए। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।